think about this work is how are we then The Bharatiya Janata Party and Shiv Sena will retain power in Maharashtra, but with a smaller majority than what they got in 2014. That's largely due to the BJP's tally falling by 20 seats from the last election. The results make the BJP and Chief Minister Devendra Fadnavis more dependent on the Shiv Sena in this second term. Joining us to talk about the results in Maharashtra and its implications are Sanjay Pugalia of Quintillion Media and senior journalist Anosh Malekar. Mr. Pugalia, we've heard press conferences from both Uddhav Thackeray and then more recently Devendra Fadnavis. Uddhav Thackeray spoke of the Maharashtrian voter bringing the government of the day back to earth in a sense and keeping it anchored, while Devendra Fadnavis called it a clear mandate for the government of the day. What do you read between the difference in how the two parties have interpreted this verdict? क्लियरली शिवसेना के लिए ये एक बड़ा ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने जैसा है, क्योंकि उनकी टैली जो है वो करीब करीब मेंटेन हो गई और बीजेपी जो डोमिनेंट पार्टी बनना चाहती थी और चाहती थी कि शिवसेना पर उसको डिपेंडेंस न रहे, वो नहीं हो पाया है। तो भले ही ये क्लेम करें बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कि ये हमको वापस मैंडेट मिला है, हम आ गए हैं, लेकिन ये मैंडेट उनको कम मिला है। शिवसेना अपोजिशन की तरह से बिहेव करने के बावजूद अब इस कोलिशन में अपना रोल डिक्टेट कर पाएगी और 50-50 के फॉर्मूले की वो बात करेगी, ये प्रेशर भी इसमें दिखलाई पड़ता है। तो उद्धव के स्टेटमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी चाह रहे हैं हमारे साथ और हमारी ताकत बढ़ गई है। बेसिकली यही उसका डिकोडिंग हो सकता है। Anosh, in the last 2 weeks, you've done a lot of travel in Vidarbha in Western Maharashtra. We spoke earlier this week when the exit polls were out, and slightly before that when we spoke. Much of the BJP's retracement of seats has happened particularly in Vidarbha and parts of Western Maharashtra. Can that be attributed directly to economic issues, rural distress, or are there caste equations involved in that as well, where the BJP has gotten the math wrong? It could be a combination of all three that you have mentioned. The economic issue, I think, is showing signs. People are worried, getting worried, especially the urban and semi-urban areas. And rural distress, of course, was a big issue. But in Marathwada. The third issue that you spoke of is the caste equations. I think more than caste equations, I think it was the attack on Sharad Pawar that really got people moving, especially in Western Maharashtra. And Pawar, of course, is the old fox of Maharashtra politics, and he did manage to turn the tables, I think, on the BJP. Sanjay, over the last couple of years, we've seen across many states, and particularly in these last couple of months in Maharashtra, the doors of the BJP being opened to leaders from the other side being brought in, and an attempt to be made that the BJP and its allies become the only political space in the entire state. Not only has that not happened in terms of how much the opposition has got in this tally, but also that many of those people who've been brought in have lost at the assembly level and also the Lok Sabha by-election that happened in Satara. So this idea that the BJP will accumulate from everywhere else has suffered a setback today in the party strategy, hasn't it? बिल्कुल, ये जो ऑल इनकम्पासिंग एक डोमिनेंट पार्टी बने और डेमोक्रेसी का सिम्बलेंस दिखाने के लिए कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हों जिनको हम मैनेज कर लेंगे, बड़ी पार्टियां जो हमसे बार्गेन करेंगी, निगोशिएट करेंगी, हमारे इक्वल बैठना चाहेंगी, ये लोग हमको पसंद नहीं हैं। इस फिलॉसफी के साथ बीजेपी कोशिश कर रही थी कि सारे रीजनल फोर्सेस को भी वो एक प्रकार से कंटेन कर ले या एलिमिनेट कर दे, वो नहीं हो पाया है। दरअसल रीजनल फोर्स के रूप में शरद पवार का एक
एक तरीके से कहिए कि सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी, कंसोलिडेट कर गए क्योंकि सीटें बढ़ा ली उन्होंने, जबकि कांग्रेस वहां लड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसे में ये जो बीजेपी का मॉडल था कि कहीं से भी किसी को भी तोड़ करके ले आएंगे और उससे हम डोमिनेंट फोर्स बन जाएंगे, ये इनका फॉर्मूला सिग्निफिकेंट ढंग से यहाँ पर फेल हुआ है। दूसरी तरफ इनके जो रेबल थे जनरली उसको ये डाइल्यूट कर देते थे, मना लेते थे, खड़े नहीं होने देते थे। दूसरी पार्टियों के रेबल बहुत खड़े कर लेते थे। तो अभी मैंने सुना देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि करीब 15 लोग तो हमारे ही हैं जो हमारे साथ वापस आना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि बीजेपी शिवसेना की अच्छी इलेक्शन प्लानिंग के बावजूद अगर 40-50 रेबल थे, जिसमें से 15 गोइंग बाय देवेंद्र फडणवीस फिगर, अगर 15 जीत करके आए हैं तो ये भी बताता है कि रेबल का नुकसान बीजेपी शिवसेना को अच्छे खासे पैमाने पर हुआ है। तो ये है कि इलेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट जहां है वहां सामने वाले राइवल को खत्म कर दो, तोड़ करके कहीं से भी लोगों को ले आओ, अपना रिबेलियन कंटेन कर लो, हर तरीके से कंट्रोल करो सिचुएशन को। ये नहीं हो रहा है। स्टेट इलेक्शंस में आप देख लिए बीजेपी की विक्ट्री, एक बीजेपी की विक्ट्री यूपी वाली आप छोड़ दें तो हर जगह कोई ना कोई इफ एंड बट है, उसमें बहुत सारे राइडर लगे हुए हैं। कोई ऐसी विक्ट्री नहीं हुई है जिससे आप बहुत खुश हो सके। आप गुजरात को भी याद करिए कि कैसे जीते थे, कर्नाटक किस तरह से जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश वही रिमाइंडर है कि एक हेगेमोनी वाला फोर्स पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को कंट्रोल करेगा, डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन के आएगा और कुछ पिग्मी प्लेयर होंगे सामने डेमोक्रेसी का सिंबल्स दिखाने के लिए। ये इसका टोटल रिजेक्शन है बाय द हैंड ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन पार्टीज ने प्रोएक्टिवली कुछ नहीं किया है, लोगों ने किया है। Anosh, how do you see the dynamic between Mr. Fadnavis and the Thackeray family changing because of these numbers? Now that we have a fair estimate of where these numbers are settling, neither were very specific in whether a deputy chief minister was being sought, whether a rotational arrangement or an equal portfolio set was being sought. But that dynamic will shift without question now, wouldn't it? Certainly. The dynamic has shifted since today morning when the numbers started coming out. And though Uddhav Thackeray has been, presenting his decent face, I saw on television the others speaking, and I believe, within the Sena now it's very clear they are going to get back at the BJP. All that happened to them in the last 5 years. And let's wait for a few days, certainly. But I am sure, the pressure on Uddhav Thackeray from the party would be to demand not the deputy chief minister's post, but in fact, even stake claim to the chief minister's post. In fact, some of the tweets I saw from the Sena members, or Sena supporters, they are saying the choice is whether to align with the BJP and get the deputy chief minister, or to align with someone else, naturally, indicating the NCP and Congress, and get the chief minister's post. Anosh, is that still open given the way Uddhav Thackeray spoke in this evening's press conference? Because he seemed to shut that door. He seemed to say that the government that has been in power for the last 5 years is what will continue, even if some of the power dynamics in it change. Is the idea of that, as you said, that as some have floated today, a Shiv Sena plus NCP plus Congress combination, is that door still open? Have the Thackeray's themselves given any indication of that? I don't know if the doors are open, but in politics, nobody closes the door. In fact, we are discussing Uddhav Thackeray, but before that, when Sharad Pawar spoke, Sharad Pawar said that we have got the mandate to sit in the opposition, and now that is the NCP and the Congress, are going to sit in the opposition. But as it's journalistically known, and also it's a tradition, when you comment on Pawar, you always say that he doesn't say what he does, and he never says what he's going to do. So, I still believe that anything is possible, and I think that right now, from tomorrow onwards, they are going to go on a Diwali break.
and they're going to come back, reassemble, and I think after the real festivities are going to begin after the Diwali break. Sanjay, on the topic of Mr. Pawar, एक अजीब तरीके का problem of plenty नहीं खड़ा हुआ NCP के लिए, in that Mr. Pawar for the last 15 years has been, while he enjoys that strength on the ground in Paschim Maharashtra, the fact that within the power circles he's been a Delhi politician, and as somebody who'd indicated that he was slowly tending towards retiring from active politics, this number makes it incumbent that he stays involved, because it is not settled yet whether the party in the party succeeding him would be Ajit Pawar or Supriya Sure. So this, in a weird way, makes sure that Mr. Pawar has to handle a greater strength more actively than he would have thought. एब्सोल्युटली, और पवार साहब उसके लिए बिल्कुल इक्विप्ड हैं और फिट हैं। अच्छी बात यह है उनके साथ कि वो भले ही नेशनल पॉलिटिक्स में रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ और उनका इंटरेस्ट उसी लेवल पे है जैसा पहले रहा होगा। अब मतलब ये है कि जो सक्सेशन की लड़ाई थी और अभी जो बीजेपी का ऑनस्लॉट था, पर्सनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में बुलाने का इंडिकेशन देना, प्रफुल्ल पटेल के पीछे ईडी को लगा देना, अजित पवार को इरिगेशन स्कैम में इन्वॉल्व करके उसको उलझाना, उनको उलझाना, इस तरह के सारे एफर्ट में पवार साहब के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। सक्सेशन क्राइसिस का पार्ट 2 था, लेकिन इससे वो भले ही पावर में नहीं आए हों, लेकिन पॉलिटिक्स में ये रोल तो उन्होंने वापस एक तरीके से अपने हाथ में रिट्रीव कर लिया है, जिसमें वो रिजुविनेट हो जाएंगे। उनको वो स्पेस मिल गया है जहां अगर कोशिश थी कि उनको इररिलेवेंट बना दें, तो अब वो नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि बीजेपी और शिवसेना में एक कोएग्जिस्टेंस हो भी जाए तो भरोसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये वाला कॉम्बिनेशन बन पाया इस बार, और किसी तरीके से लोग सरकार बना भी लेंगे। इसीलिए शिवसेना को भी यही डर था कि कहीं हम भी खत्म ना हो जाएं, तो बीजेपी को लेकर के शिवसेना भी बहुत ज्यादा स्केप्टिकल रहने वाली है। और यही वजह है कि रीजनल पार्टी के तौर पर वहां पर शिवसेना और एनसीपी दोनों जो है वो एक नए ढंग से पॉलिटिक्स को वहां शेप करेगी, और बीजेपी जो डोमिनेंट होने की कोशिश कर रही थी, अब उसको थोड़ा सा पार्टनरशिप में चलना होगा, थोड़ा बातें मानना पड़ेगा, थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे की बातों को। Anosh, when we spoke last week, you spoke about how for the last 5 years the BJP's tried to make its way into the cooperative organizations that the Congress and the NCP have drawn their traditional strength from, and they've been able to take hold of many of those. Despite that, that's not been able to translate into not even a high performance. They've not been able to hold the ground that they made in 2014. Why did that translation not happen? The feel on the ground that one gets is that this really disturbed the Sena cadres, the Shiv Sena cadres, because places like Pune, where they totally banished the Sena candidates, and it was all BJP. So it was Shata Pratishat Bhajapa, and rather than disturbing their political opponents, I think they ended up disturbing their political ally. And if you look at the results or the trends that are very clear now, though the results are yet to be out, from Kolhapur, Satara, Sangli, it's very clear that the Sena cadre has totally worked against the BJP. In fact, some results are quite surprising in Kolhapur, and it's an open secret that a young Congress candidate here or a NCP stalwart there have got inside support from the Shiv Sena. So that's one thing that has happened. Second thing is, it also galvanized the workers of the Nationalist Congress Party. And more than that, it galvanized Sharad Pawar, the sleeping giant, I think. My final question, sorry. If I may say so. Sorry. Yeah, if I may say so. Yeah. Because if even now and a few days before, just 2 days before voting, that one picture or that small video clip campaigning in the heavy rainfall, Pawar, rain drenched in Satara, I think that did major damage to them.
All right. My final question to you, Mr. Pugalia, is this. After a particular set of elections where we saw a reversion from the, or rather a departure from the mean, that this is the BJP's traditionally its home strength is in urban India, in semi-urban India. Are we seeing a reversion to that? That what part has been left untouched is the party's strength in the greater Mumbai region, and those numbers have stayed untouched. Are we seeing, after the expansion of the last 5 years, some of that being reverted to? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लोकसभा वाले विक्ट्री के बाद एक कॉम्प्लेसेंसी भी रही होगी, तो अर्बन एरिया में इनका आउटरीच और इंगेजमेंट हर वोटर से बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी बिल्डिंग में बीजेपी का कैंडिडेट कम से कम 2 बार आकर के गया और कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम था। तो अर्बन सेंटर में इनका एक जिसको कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ कैंपेन वाज मच ग्रेटर कंपेयर टू द रूरल एरिया, बीट हरियाणा और बीट महाराष्ट्र। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप सोच रहे थे कि अपना नैरेटिव आप इम्पोज करेंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लोकल सोशल पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि वो एक हेगमोनिस्टिक अम्ब्रेला के नीचे आ गया है। ऐसा नहीं है। मराठा और जाट ये 2 कास्ट का जो बिहेवियर है, इसको कास्ट के रूप में मत देखिएगा, ये सोशल कमेंट्री के रूप में देखिएगा कि बीजेपी के एक बिल्कुल यूनिटरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का जवाब आया है दोनों तरफ से, मराठा हार्टलैंड से भी और जाट हार्टलैंड से भी, कि आप हमारी सोशल रियलिटीज को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बदल सकते। तो ये है रियल इंडिया का, भारत का मैसेज बीजेपी के लिए। अर्बन इंडिया में सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही वेल ऑयल्ड, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मेगा मशीन चलाती है बीजेपी, उस मशीन को अभी भी हमको कम करके नहीं आंकना चाहिए, शायद उस वजह से। Okay, so finally, Anosh, we come to the point of the number 4 place party in today's results. We've not spent any time talking about the Congress. Who leads the Congress out of this situation in Maharashtra? You've had, again, the previous Chief Minister, Prithviraj Chavan, has been sidelined. The Chief Minister before him, Ashok Chavan, was Pradesh Congress Committee Chief for a while. He was once the only, one of 2 only elected Lok Sabha members. You have Barsaheb Thorat, who has strong ground roots in the cooperative movement, but that, as you said, is something Mr. Pawar finds more grounding in. Where does the Congress go from here in Maharashtra? I wonder what they really want to do. And I am being honest, you know, from going by what Mr. Sushil Kumar Shinde said at the height of the assembly campaign, that we are exhausted, we are tired. So I think first the Congress in Maharashtra has to rejuvenate itself. They have to tell themselves they have got to fight. And once they have done that, maybe they could find time, come together and really decide about their leadership and who leads them in the state. You know, right now it's a very sorry state of affairs. But what should really motivate them is, you know, even at the state they find themselves in, tired, exhausted, with no motivation left, you know, people still believe and give them 40 MLAs, 40 plus MLAs. You know, that should hopefully, you know, finally, you know, tell them that they need to do something in politics now. All right. On that note, Sanjay Pugalia, Anosh Malekar, thank you very much for making time to assess and dissect the implications of the results in Maharashtra. Very soon we'll get you more analysis of what's happened in Haryana as well. So keep watching BloombergQuint.